npm install npm स्पेस install और स्पेस देके SQLite 3 SQLite 3 ट्राई मारो एंटर करो। तो इस कमांड से हमारा इंस्टॉल होता है। जैसे हम लोग रिएक्ट में भी ऐसे ही करते हैं ना, पैकेज डाउनलोड। ये स्पेलिंग रॉन्ग होगा, SQL डबल नहीं, एल नहीं है, सिंगल एल। ओके हाँ सिंगल एल। नहीं, you don't have to do that. Just press up की एरो की, अप डाउन और अप की और डाउन की, तो वो तुम्हारा पिछला कमांड आ जाएगा। अप की और डाउन की को ट्राई करो। नहीं आया? नहीं है ऐसे। नहीं, अप की मतलब वो एरो, अप एरो यस डाउन यस नहीं वैसे नहीं हो रहा। नहीं। अप मतलब अप या डाउन से आता है। ठीक है, कोई नहीं, टाइप करो npm I is a shortcut for installation and SQLite पता ही है, SQLite 3। डबल एल नहीं चाहिए। डबल एल सिंगल, हाँ डबल एल नहीं मिला ना उसको। तो देखते हैं हमारा इंस्टॉल होता है कि नहीं होता है। हो गया एरर होगा कि एरर हमारा उसमें हो गया आई गेस। हो गया। अभी लिखो npm स्पेस आई एक्सप्रेस जेएस, एक्सप्रेस सॉरी नॉट जेएस, एक्सप्रेस EXPRE डबल एस, उसमें लिखा है ना रिक्वायर करके जो है, तो वो एक्सप्रेस है। हाँ बस एंटर मारो। तो ये दो पैकेज है, ठीक है। अभी जब हम नहीं, जेएस नहीं है, जेएस नहीं है, एक्सप्रेस ओनली। हाँ तो जब हम ये दोनों एंटर मारो, हाँ जब हम दोनों इंस्टॉल कर लेंगे, यू कैन सी a package.json file will be created with the two on that, है ना, करेक्ट। अब क्या करो, हाँ लिखो कोड स्पेस डॉट, so that this project will be open in the VS Code, करेक्ट। तो ये VS Code में ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब क्लियर है ना। बस उस फाइल पे क्लिक करो। नहीं, नोड मॉड्यूल्स पे नहीं, नोड मॉड्यूल्स से पता ही क्या होता है। नो नो फाइल नो नो, नया फाइल बनाना है। नो नया फाइल नहीं बनाना है। नहीं क्या कर रही हो, वी डोंट हैव टू क्रिएट न्यू फाइल। नो नो नो, डोंट जस्ट ओपन द एग्जिस्टिंग दैट फाइल ना, दैट द कोड। या इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, वो नोड मॉड्यूल बहुत बड़ा होता है एक्चुअली इसलिए वो उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। यू हैव टू, नो नॉट नोड जेएस के अंदर नोड मॉड्यूल्स है, उसको ऊपर हाँ उसको, हाँ अभी उसको मिनिमाइज करो, करेक्ट। वो फाइल को खोलो, करेक्ट। अब दिखा। अब यहाँ देखो, अब इसको इसको डिबगर करो, डिबग पॉइंट लगाओ लाइन नंबर 1 पे या 2 पे, एंड चेक which line is giving error, start debugging, करेक्ट। Node.js, हाँ तो वो डिबग होगा, एंड नाउ यू कैन चेक फर्स्ट लाइन इज गिविंग एरर, सेकंड लाइन इज गिविंग एरर, व्हाट इज हैपनिंग। जस्ट वेट, क्या हुआ, पहले लाइन में आगे क्या होगा, व्हाट हैपेंड। नहीं डिबग पॉइंट नहीं लगाया ना, डू पुट द डिबग पॉइंट ना, लाइन नंबर 1 पुट रेड। हाँ रेड नहीं हुआ था, हो गया अभी रेड हो गया। अभी करो रन, स्टार्ट डिबगिंग, वेट, है ना। नाउ नो नॉट दैट, सेकंड एरो, सेकंड वाला। हाँ इससे क्या होता है, वो लाइन बाय लाइन होगा। फर्स्ट वाले से क्या होगा, इट विल ट्राई टू रन एवरीथिंग, एंटायर प्रोग्राम, एंड दिस विल रन ईच लाइन, है क्लिक ऑन दैट। तो पहला लाइन में तो एरर नहीं आया, करेक्ट, मींस योर SQLite 3 इज प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड। सेकंड लाइन में हम क्या कर रहे हैं, विल ट्राई टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, उस पर क्लिक करो, क्या एरर मार रहा है देखो। हाँ फिर से करो, यू कैन सी एरर इन द डिबग कंसोल। नहीं आया, डिबग नहीं आया, अच्छा हो गया आई गेस, इट क्रिएट्स आई गेस। अभी करो नेक्स्ट 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 करते जाओ, देखते हैं क्या होता है। तो इट इज ट्राइंग टू क्रिएट 2 APIs, वन इज गेट, वन इज पोस्ट। क्लिक करो उस पर, लिसन 3 फिर से क्लिक करो, फिर से क्लिक करो, नहीं हुआ, फिर से करो, हो गया ना। एंड दिस प्रोग्राम, इफ यू सी व्हाट इज द एरर कमिंग, you can expand that, या
क्या बोल रहा है? प्रोसेस अनकॉट एरर, ओके, अनेबल टू ओपन डेटाबेस फाइल, ओके, हाँ जो तुम्हारा आया था ना, तो यू टू क्रिएट दैट फाइल आई गेस, तो क्या करो वहां पर जाके वही सेम नाम का, यू कैन सी ना, अब देखो वो जो डेटाबेस फाइल है ना उसका पाथ क्या है, ऊपर जाओ, टॉप पे जाओ, व्हाट इज द पाथ ऑफ दैट फाइल? इन द करंट डायरेक्टरी यू हैव टू क्रिएट अ डेटा नाम फोल्डर, और उसके अंदर इस नाम का एक फाइल बनाना है। करेक्ट, तो डेटा स्लैश that same name, and always whenever you are .db, so it will be .db, the extension of the file will be .db. Enter. Now try to run and see. ये बंद, इसको बंद करो, हाँ इसको रन करना है, करेक्ट, स्टार्ट रन, रन start debugging, you can now directly click on the first one, not first one. First one because I want to check ना बना कि नहीं बना, क्या वो first one, first वाला, continue, हाँ that is not continue, click on that. तो देखो ये आ गया ना, submit get and post, and it is not giving any error, correct? Yes. And see, this is listening also, your program is not ended, देखो ध्यान देगा, it's not ended, correct? Generally क्या होता है, your program ends ना, but your program is not ending, see ना, I will tell you. देखो अभी मान लो कि मैं एक Node.js का एक और प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है, लिखूंगा where x equal to this and console.log, तो वो तो एंड हो गया ना, उसने ऐड किया, प्रिंट किया console.log, and the process is finished. एक काम करो, उसको स्टॉप करो, उसमें वो समझाता हूँ, स्टॉप करो, एक और फाइल बनाओ, उसको लिखो test.js whatever, एक और फाइल बनाओ test.js, एंटर मारो, हाँ एंटर करो, अभी सिर्फ लिखो where x equal to 5, और नेक्स्ट लाइन पे लिखो console.log x, सिंपल, ठीक है। अभी put a debug point and debug each line, let's see what happens in this. So what, wait अभी wait, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यू बोथ आर नॉट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ, what we run is known as a program, correct? Yes. What we run is a program, whether it is a .NET code or किसी भी language में, it's ultimately a program, computer program, correct? We are running on the computer in any language, correct? It is giving instruction to computer, do this, whatever. So when it runs, it will be, that program will be in the memory. मेमोरी मतलब वो रैम में जाके वो एक प्रोसेस बनाता है, एंड इट विल एग्जीक्यूट इन दैट प्रोसेस, एक प्रोसेस अलग से प्रोसेस बनता है, प्रोसेस मतलब एक प्रोसेस, इफ यू वांट टू स्टडी मोर, बट यू कैन सर्च व्हाट इज अ प्रोसेस. तो प्रोसेस कुछ नहीं होता, इट मींस लाइक a new task is running in a way, just think like simple, a new task is running, for example you open teams, तो teams भी क्या है, एक टास्क की है ना, एक प्रोसेस ही रन हो रहा है, करेक्ट? सिमिलरली ये भी एक प्रोग्राम, एक टास्क का प्रोसेस रन हो रहा है, बट अभी ये जो प्रोसेस रन हो रहा है, आफ्टर लाइन नंबर 2 द डिबगर विल एंड, अभी नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करो एंड यू विल सी द प्रोसेस विल फिनिश, अभी नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करो, फिर से करो, एंड यू कैन सी द डिबगर सिंबल विल गो अवे, क्लिक करो, ये जो 5 सिंबल था ना, सब गायब हो गया, Yes, sir. Yes, sir. means your program is has completed the execution, and the memory your program is not running, am I correct? Yes, sir. आपका जो प्रोग्राम है वो मेमोरी में रन नहीं कर रहा है, इट्स कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन, उसका वो फिनिश हो चुका है, वो दैट प्रोग्राम हैज एंडेड, वो प्रोसेस नहीं है मेमोरी में, ओके, बिकॉज, बट अब लेकिन अब वो अपना प्रोग्राम में जाओ, वहां पर क्लिक करो, क्या होता है आफ्टर, नाउ रन दिस थिंग, रन, हाँ रन, एंड या स्टार्ट डिबगिंग, ठीक है, एंड जस्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट वन, देखो ये सारा लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ईच एंड एवरी लाइन, and this line which you see na, submit get and post, and with the URL, that is the last line na, if you go down, if you go down, Console, yes. this is the last Yes, sir. line, what you see in your debug console is the last line, so it means that your program has completed the execution, still the process has not ended na, Yes, sir. why?
because the debugging is still running. Yeah, debugger is running, but why debugger is running still? What is the use of that? What is the difference between that is also a Node.js program वो जो मैंने बनाया था डेमो test.js वो भी एक सिंपल सा Node.js program था. This is also a Node.js code. So Memory what is is running. different in this? Yeah. Memory is still running. Why? Why? कुछ तो different है ना इसमें. Why? Because of a database or what is the issue? What is the different thing in this that is the process is still running? Okay, I will give you a hint. Go up, go up, go up. थोड़ा सा ऊपर जाओ. हम्म, थोड़ा सा ऊपर जाओ. लाइन नंबर 30 14 पे 14 से नीचे आओ. थोड़ा सा नीचे आओ. 15 पे डिबग पॉइंट लगाओ. लाइन 15 पे डिबग पॉइंट लगाओ. ना can you understand what is happening here? rest.api.get this comma this what is इसका मतलब क्या है? Okay, REST API dot get. What is dot get? What is this dot get? Method It's a method. Perfect. And it takes how many parameters? 2. Two. What is the first parameter? The The string. first, the first parameter is the route or the path of that API. Correct? Hmm. है ना? हर एक API के path होता है ना slash this slash that है ना? And second parameter is what? Function. Function. मतलब कि अच्छा उस parameter पे जब किसी ने invoke किया तो वो कहाँ पर आएगा? वो यहाँ पर आएगा. Okay, now go to the URL. Navneet, go to that and copy the URL. Localhost 3000 ही copy करो. हाँ, go to that. Go to the browser, paste and paste without data. Remove the data. Okay. Okay, no problem. ये भी तुमने हाँ अभी तो वो घूम रहा है. Why it is अभी एक अभी now go. Can you see that in your Node.js code what is happening? It has become yellow. देखो down below in your menu bottom दिख रहा हो? Yellow हो गया. क्यों yellow हो गया? Because it hits the break point. अगर it's not running in the process, how the web server will work? Web server क्या होता है? It takes multiple requests ना. It takes the request, it gives the response. तो अगर process running ही नहीं memory में, so how it will serve the request ना coming from the browser? Browser ने एक request मारा कि अच्छा मुझे ये API चाहिए, तो वो कुछ तो कोड रन करेगा ना. तो अगर वो कोड Yes, sir. रनिंग ही नहीं है मेमोरी में, then how it will run ना? So the code has to be always running na, to serve the request. For example, suppose you go to any website, Facebook, Gmail, whatever, you type something, something happens, no? You type something. So obviously the request will go to some backend. From there it will run. Na? So backend has to always up and running. Na? If it is not up and running, so how it will do? Na? It has to be Hmm. already running. Hai. No, your debugger is already on. Na? It will not work. Na? Yes, sir. Debugger, you have to do that. Just give me 2 minutes. Huh? My mom is calling. Huh? Continue. Hello, 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 hello. Navneet, continue कर दो. अभी चेक कर लो. Not yet.
हेलो ये हाँ हाँ हेलो या Yes, sir. जस्ट ओके तो ओके काउंट जीरो ना सो दिस इज अ गेट रिक्वेस्ट करेक्ट आई गेस एवरीबडी नोज हाउ टू डू अ पोस्ट रिक्वेस्ट करेक्ट इतना Yes. तो किया ही होगा हाउ डू यू डू अ पोस्ट रिक्वेस्ट कैन यू सी द पोस्ट रिक्वेस्ट Sir, I have पुट द one question. डिबो पॉइंट देयर हाँ पूछो पूछो सर सर, कंसोल के बाद कुछ लाइन तो एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं है, तो कॉल कैसे जा रहा है वहां पे? क्योंकि प्रोसेस रनिंग है ना दैट इज द यूज ऑफ एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क ना एक्सप्रेस देखो क्या है दिस रेस्ट एपीआई डॉट गेट है ना will हम्म, is a callback na you see na that is a callback we're passing the function as a callback correct हाँ, second parameter is what is a है। callback only na that okay when the request will go there in the get api call this function so that is how we are creating a web server na it's very simple of way of it's very simple way of creating a web server na what is a web server कि request लो response दो how does it work na if you study more about http protocol na वो कैसे काम करता है it takes the request and gives the response भले वो json format में हो और html format में whatever but this is what happens takes the request gives the response तो node.js क्या कर रहा है express library है ना उसके वजह से वहां पर एक लाइन था ना नीचे लाओ come down if you come down नहीं put a debug point on line number 21 not there 21 पे लगाओ क्योंकि 21 पे वो कॉल बैक हाँ नीचे लाओ थोड़ा सा कोड स्क्रॉल डाउन हाँ if you scroll down you can see one code is there ना हाँ scroll down you scroll down there's this code no what you're doing just scroll down ऑलरेडी चालू है दोबारा लॉन्च नहीं होगा ना वन तो दो रेस्ट एपीआई डॉट लिसनर 3000 कैन यू सी दैट लिसन yes sir that is what is doing the main thing that listen on 3000 port number means this process will be alive in that port number different ports are there when we run the local program ना process होता है different ports पे run करता है a lot of ports in our computer तो वो 3000 पोर्ट नंबर पे रन कर रहा है इज ट्राइंग टू लिसन कि अच्छा कोई रिक्वेस्ट आया क्या अगर रिक्वेस्ट आया तो कहाँ भेजना है दैट इट विल डू ना रेस्ट एपीआई द रेस्ट एपीआई इज नथिंग बट योर एक्सप्रेस जेसन है ना देखो ना व्हाट इज दैट रेस्ट एपीआई तो नाम है ना रेस्ट एपीआई बट एक्चुअली इट इज अ वेरिएबल ऑफ एक्सप्रेस library if you see or using that we are getting two different what I will say two different this thing uh, what I will say this thing mm, two different action no? One is get one is post postman hai you do have postman Is the check yes sir sorry check Karan process or your network is I guess not good actually your voice is breaking okay. your voice is breaking no it's not okay yeah, can you try to switch the network possible because yeah hello I can hear it but your voice is breaking Hello. Now? hello bolo hello Karan Hello. हाँ बोलो बोलो सुन रहा हूँ मैं सर, मतलब मेरा ये कहना है कि ये जैसे जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन वर्क करता है, ये सेम वे में वर्क करता है। हाँ वही चीज है लाइन बाय लाइन ही वर्क कर रहा है बट वो जो लाइन था लाइन नंबर 34 उसने क्या हाँ, बोला कि लिसन करो मतलब प्रोग्राम एंड नहीं होगा इट विल हैव दैट प्रोसेस अलाइव इन द मेमोरी दैट इज व्हाट इज द दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ना अदरवाइज वो डिबग क्यों चालू ओके, रहेगा ना या so it is we are thinking that program is ended but program is still running in the background we can't see that but it's still running in the background it is listening to ओके। any incoming थोड़ा सा जो ये difficult है I understand you because if we are not from computer science थोड़ा सा difficult होता है सब चीज समझने के लिए है ना but we have to हुँ, think logically that अच्छा अगर process running ही नहीं है then how it will work ना हुँ, or do one thing what is your name Navneet हाँ stop that
Stop that. Now go to the run. Go to run and say where is that? No, go not go to run. Go to view terminal view and view terminal. Terminal is there. No? Terminal is in the bottom. See there only. View. Go to view and terminal. हाँ open that. ठीक है किसी भी अगर Node.js को मुझे रन करना do you know the command to run that? Type node Node type node and then the give file tab name. just type just press tab 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 huh. Do you want to run this? No, correct, again tab. Do you want to run this? No, you again tab. Do you want to run this file? Yes, sir. Yes. Then enter. So use the shortcut key na tab because इसमें mistake नहीं होता है. See now see submit same आया ना. Yes, sir. Submit get and post and there's a cursor there. Cursor is there मतलब it is still listening. वो finish नहीं हुआ है. Yes. Right. वरना cursor क्यों रहेगा? It will Okay, show now DS go to D हाँ. drive location. Yes. Yeah, it's still running. And now do Mhm. now again go to the browser और वो local host 3000 कहाँ पर लिखा है? Remove the data. Only type localhost 3000 and enter. See what happens. क्या लिखा Cannot है? get. Cannot get. Something is happening ना. But you're getting something from the server only ना response. ये जो आया cannot get is message coming from somewhere ना. Sir, this is because of this listen. Correct. This is because of this listen. Express.js and that is the method listen. That's why it is happening. So that is how it is. It's a very simple way of creating a web server. It's very easy. तुम्हारा web server ready है, backend is your backend is ready, up and running. और क्या चाहिए तुम्हें? यही चाहिए ना? You should have get request, post request. यही होता है ना और क्या होता है? You use that only ना in project in React. Get, post, insert, update. You can do anything with get and post. अभी देखो अभी दो उसमें दो हमने डिफाइन किया get और post डिफाइन किया करेक्ट Yes, sir. डिफाइन किया सपोज go up है ना go up I ask you can you create one more endpoint जैसे यहाँ दिया ना देखो get endpoint can you create one more get endpoint which will return just hi hello whatever can you do that return just hi something like that जैसे मान लो कि मैंने बोला कि स्लैश होम पेज so it will return okay hi that's it. Just try to Yes. see the code. It's very simple. If you see the code, what is happening? It's not that much difficult. REST API dot get that slash home. You have to copy the entire code. You know Okay. which entire code means? Yes, this because this is the get na. We are duplicating, but we will not hit the DB. Slash home लिखो. But we this time will not hit the DB. Simple है ना? Okay. Yes. So that now, 1 minute. Yeah. To remove that db dot get and all those things. Okay. वो भी you have to I guess 22 line number भी delete करना पड़ेगा 22 line number no not that 22 no that is no correct now request and response okay do one thing just put a debug point on line number 21 कुछ नहीं करो put a debug point line number 21 okay now hit it now run it again or debug it again and then we'll see what is happening and you can see this req is request and res is response. So हमारा कैसे काम करता है एनी वेब सर्वर इट टेक्स अ रिक्वेस्ट एंड इट रिटर्न्स द रिस्पांस सिंपल है कुछ भी नहीं है इट टेक्स द रिक्वेस्ट इट रिटर्न्स द रिस्पांस क्या हो गया रनिंग ना हाउ डू यू रन ओके टेस्ट इट ना टेस्ट करो नहीं बट इफ यू वांट टू डिबग देन यू टू रन एंड स्टार्ट डिबगिंग देन ओनली यू कैन डिबग you can't debug from running है ना you to go to run and start debugging yeah correct
देखते क्या होता है is try running or not running or no not running but Sir, I think it's that slow. start debugging. Got ended. So I will tell. Ended. Check the debug console. What is there is some error. That 3000 port is already occupied, correct? And you are trying to again use the 3000 port, na? Correct? वही है ना? Address already in use 3000 Already port. in use. तो Yes, इसको sir. कैसे करेंगे? Go to terminal, stop that process. Because terminal में जाओ, terminal लिखा ना, हाँ, उसमें already running है ना? तो stop that ना? हाँ, now it is okay. Stop हो गया. कोई इशू नहीं. अब try करो, it will run. Getting point? तो ऐसा होता है. You think कि हाँ run already run हो रहा है ना? You don't see it is already running on a different command line. अभी रन हो गया ना, कोई इशू नहीं है. Now hit that Yes, sir. home. Go to the browser, hit that home thing, /home. See what is the response. Obviously, it will hit the breakpoint. See it hitting, below. Can you see? It's hitting the breakpoint, correct? देखो ना, it's hitting the breakpoint, correct? Yes, we can see that. No, it's hanging. Now, can you check the request? What is there in request? Can you see in the नहीं यहाँ नहीं वहाँ पर debugger में देखो. You can see your left in the left variables दिखा है ऊपर में request response. Can you see? Left में लेफ्ट में देखो वो वेरिएबल्स दिख रहा Variable local. है. REQ RES दिख रहा है. Yes, sir. Incoming message. What do you open? Can Message. you open that? What is there? REQ में क्या क्या है? कुछ दिया हुआ है ना? And similarly, parse URL. Parsed URL is what is the value? Null. What to call null is there? Can you open that? इसमें कुछ है /home है ना? Yes, That sir. /row and what some कुछ तो you can see है ना? It's correct ना? That is the only correct path ना? /home हमने दिया ना, तो वो यहाँ पर आया, correct? Similarly, can you open the response RES? What is that RES? उसमें क्या है? We can So, check that. so is it case sensitive or something like that? No, it's not case sensitive. It's not. So something is there. Huh? I'm not saying you will understand it, but you can see basic request object and response object, correct? In JavaScript, most of the things are object, and request is also object. Response is also object. Now we want to return something. Abhi, step you continue. What happens? See, what is the response you are getting? Now see the response. Go in the browser. क्या आया वहाँ पर? Wait. It's I am saying. I guess it will give a error. An error. It's keep on hanging. I don't know. It is keep on hanging. It Okay. is Can not you? responding. Is it because? Yeah. I guess so. It is not responding. It is waiting. No? This guy has tried to access this, and it is still waiting for the response. The response never came. Correct. So वो hang हो गया. So okay. So do go back. So how do I return the response? How do I return the response? The code is already in front of your eyes. Just check. Already code is there. That response is return. res.js. Correct. Response.json. If you see na, in the post also we are returning some data ना. res.status. कुछ तो return करोगे ना. And you can return simple as whatever you want to return. Empty कर दो. Hello. चलो empty करो. कोई issue नहीं. Empty कर दो. कोई issue नहीं. Again, you have to rerun. Na? You have to stop that also. You have to rerun from that also. Na? You have to change the code. Restart. वहाँ पे एक restart का बटन था. उससे पहले वो है ना. That is reload button. तो Okay. एक reload है ना. वो भी हो जाएगा. ओके स्टार्ट हो गया. ठीक है. नाउ गो इन दैट ब्राउजर. क्लोज दैट. वो हैंग हो गया है. दूसरा हाँ ये हैंग हो गया. फिर से ट्राई करेगा वो. अभी होम पे क्लिक करेगा तो फिर से उसने हिट किया. जैसे बॉटम पे 2 हिट किया उसने ना. हिट किया देखो वहाँ नीचे में हिट किया ना. इन द VS कोड कैन यू सी इट इज हिटिंग ना.
in the VS code ना, in the bottom, yeah, it is hitting, correct. फिर execute this thing, देखो response क्या आता है, check. No, you have to run that ना, you have to, it is hanging ना, you अगर वो run नहीं करो तो keep on hanging ना, click on that, 2 बार तुमने किया, click on that, yeah, it will now end हो गया, वहाँ देखो क्या response आया, It's empty ना, आया ना, but yes, it's sir. coming ना, main thing is coming. Now copy the same URL in Postman, see you will get the same thing. You can do post request, bad request, whatever, okay, you get that thing. No, Postman है ना, postman, not post, Okay. postman. postman, confusion हो जा रहा है. Okay, okay, sir. Because it would still hang na, because you have put the debug point na. Always remember, you see that is hanging. Why? No, don't send. You are again sending Navneet, because पहला रिक्वेस्ट खत्म ही नहीं हुआ, तुमने फिर से रिक्वेस्ट मार दिया, क्योंकि वहाँ हैंग हो रहा है ना, वहाँ रनिंग है ना प्रोसेस, गो देयर ना. Okay. डिबगर दो ना, डिबगर लगा हुआ है ना, बार बार येलो क्यों हो रहा है, डिबगर वेट कर रहा है, बोला मेरे वो. नहीं, स्टॉप नहीं करो, Yes. कंटिन्यू करो ना, यू डोंट नीड टू स्टॉप, कंटिन्यू करो ना, व्हाई यू टू स्टॉप, प्रेस कंटिन्यू फर्स्ट वन, हाँ, इट विल गिव द रिस्पांस ना, ब्लैंक. देखो अभी रिस्पांस आया क्या, चेक करो पोस्टमैन में, पोस्टमैन में ना, मेथड इज गेट ना सर. मेथड इज गेट, हाँ मेथड गेट, अच्छा पोस्ट में क्या, बट कुछ तो रिटर्न करेगा ना, नो इश्यूज, पोस्ट भी करो, पुट भी करो, इट विल रिटर्न समथिंग ना. है सेंड, क्लिक ऑन द सेंड, एरर ना, कैन नॉट पोस्ट, करेक्ट, एरर आया ना, Yes. बिकॉज वो रूट डिफाइंड ही नहीं है ना, ये होम पे गेट ही डिफाइंड है, करेक्ट, होम पे हमारा पोस्ट डिफाइंड ही नहीं है, कैसे आएगा. नाउ गो एंड डू दैट. तो इसको गेट करके चेक करना है क्या? करो करो तो वो डिबग पे हिट करेगा, करेक्ट, डेफिनेटली हिट करेगा, बिकॉज हमने गेट पे स्लैश होम और गेट डिफाइन किया है ना. इट इज हिटिंग, चेक, इट इज हिटिंग देयर, VS कोड में दे रहा है, येलो हो गया, रिटर्न अगेन करो टाइम, हाँ दूसरा एग्जीक्यूट दिस, कंटिन्यू. कंटिन्यू, तो ऑब्वियसली रन हो जाएगा, रन हो जाएगा. आपने क्या बोला, रिटर्न जेसन एम्प्टी, तो वहां पोस्ट में एम्प्टी आएगा, देखो आया, आया ना. यस यस. Yes. So now we to go back to our original thing. So ऐसा मत सोचो कि request response is tied to database. No, it's simple ना. Request लो, response लो, है ना? Something like that. Okay. But अभी फिलहाल हम लोग database भी करें, because database is the main thing, है ना? Any application without database will not run, है ना? तो ये थोड़ा मिक्स हो गया. Actually मुझे पहले just API का लेना चाहिए था, DB, but एक से ले, but ठीक है, इतना hard भी नहीं है. I guess you understanding the basics, ठीक है? नाउ पोस्ट करने के लिए हमको क्या पोस्ट करना है, व्हाट इज द फॉर्मेट इट इज एक्सपेक्टिंग. ध्यान से देखो, वो तो तुम कोड देखो, लाइन नंबर 26 पे क्या लिखा है, अपडेट क्या है, काउंट सेट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस में की इक्वल टू काउंटर, बेटे काउंटर अच्छी है, ओके ओके, बट पोस्ट पे वी आर नॉट पोस्टिंग एनी जेसन डेटा, या वी आर नॉट पोस्टिंग एनी जेसन डेटा, वी जस्ट पोस्टिंग एंड इट विल अपडेट द काउंट, दैट्स इट. देखो ना, हमने रिक्वेस्ट से कुछ निकाला क्या, नहीं ना. We are not, see the, suppose if we are posting some JSON data as you post in the Python API, correct. तो वहां क्या होता है, we post something, we extract from the JSON and then it take ना. बट यहाँ सिंपल है, यहाँ पर आप पोस्ट करो, वो हिट करेगा, वो DB को अपडेट कर देगा, और फिर आपको गेट में क्या मिलेगा, काउंट बढ़ के मिलेगा ना, अपडेट काउंट ना 1 से बढ़ा देगा ना, दोनों सेट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस 1, मतलब अगर 1 है 0 तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा. ट्राई करो पोस्ट में ट्राई करो, ट्राई टू होल्ड द data endpoint in the postman, because you can't hit data post endpoint from browser, correct. वहाँ get possible है, but post के लिए you need to have postman. हाँ डेटा लिखो और पोस्ट करो, देखो क्या होता है. क्या बोलो,
स्पेलिंग रॉन्ग है क्या? डेटाबेस स्पेस स्पेस है क्या? एंड डिलीट की करो। नहीं नहीं, वहां पर देखो, डेटा के पास कुछ स्पेस आ गया है क्या? डिलीट की, डेटा पर माउस लेके जाओ, उसका डिलीट की करो। हाँ, डेटा पे माउस लेके जाओ वहां पर, हाँ, एंड देन हिट द डिलीट की विल बी देयर। हाँ, वो स्पेस आ गया, तभी सेंड करो। देखो ना, नीचे आया ना, कैनॉट पोस्ट, अभी आ गया, ये हो गया 202 एक्सेप्टेड, आया ना, 202 एक्सेप्टेड। तो ये भी पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट आर डिफरेंट स्टेटस कोड। 200 इज वन स्टेटस कोड, 202 इज वन स्टेटस कोड, 201 इज वन स्टेटस कोड। अब 202 किधर से आ रहा है? फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग? सर्वर। फ्रॉम द कोड ना, current server only, but from the code na. Go in the code and check whether 202 is there. We have to specify what code is there. See ना, लिखा हुआ 202, see ना, 202 लाइन नंबर 32। अगर एरर आया तो अब 500 एरर आएगा, एरर नहीं आया तो 200 आएगा, करेक्ट? 202, okay. So here we can define the status like. Yeah, we can define, this is known as status codes. So there are a standard status code, है ना, वो पढ़ना। What are the standard status code when we do make a HTTP request? So 200 is for OK, 201 is for creating a new request, 202 is for accepted. So it's yeah, and then अगर bad request आया, you are sending some invalid data validation fail हुआ, तो we raise a 400 bad request. There are a lot of different kind of what I can say, error handling and all those things happening. So बहुत चीज है, ये चीज हम पढ़ेंगे और इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है? तो ये चीज भी है। सो हाँ, नाउ गो बैक एंड हिट द गेट एपीआई, जस्ट चेंज दैट पोस्ट टू गेट एंड सी द आंसर क्या होता है। तो क्या रिस्पॉन्स देगा? काउंट कितना हो गया? 1। फिर से पोस्ट करो, फिर से गेट करो, पोस्ट किया मतलब उसने एक काउंट बढ़ाया, तो वो कैन चेक ना, इज वर्किंग ना। देखो, पोस्ट करने से वो अपडेट, बिकॉज दैट विल फायर अ अपडेट क्वेरी ऑन द डीबी ऑन दैट टेबल एंड से अच्छा वो बढ़ा दो। ओके, सिंपल है ना। नाउ गो टू दैट कोड नवनीत, दैट अपडेट कोड, करेक्ट? सपोज आई वांट टू रन दैट अपडेट कोड डायरेक्टली, है ना? कैन आई अपडेट दैट, कैन आई रन दैट डायरेक्टली, दैट सेम क्वेरी? So directly. मींस ऑन द डेटाबेस ना, ऑन दैट SQLite। सी, ये क्या कर रहा है, ये कनेक्शन बना रहा है उस डेटाबेस से एंड ये क्वेरी उसको दे रहा है। सी, लेट्स थिंक लाइक दैट। सपोज आई वांट टू ऑपरेट अ वॉशिंग मशीन, सो आई विल हिट द बटन कि अच्छे बटन से वो स्टार्ट हो जाएगा, इस बटन से वो ये मोड चेंज हो जाएगा। बट वॉशिंग मशीन तो कहीं और है ना, आई एम नॉट वॉशिंग मशीन, आई एम ऑपरेटिंग द वॉशिंग मशीन। सिमिलरली डेटाबेस तो एक सेंट्रल प्लेस है, एक फाइल है ना, डेटाबेस क्या है, एक फाइल है, देखा आपने ना, इट इज नथिंग बट अ फाइल। नाउ a Node.js program can access that file, a .NET code can access that file, Java code भी कर सकता है, any code ना, C++, Python, any code can access that file and modify it, or we can directly modify it using the SQLite Studio। SQLite Studio डाउनलोड किया था, नहीं किया अभी तक? Yes, sir. हाँ, तो वहां पर जाओ, अब देखो टेबल को रिफ्रेश करो, वहां पर टेबल बना होगा, देखो। बट यू हैव डेमो ना, यू क्लिक ऑन डेटाबेस, ऐड डेटाबेस, हाँ, उसमें वो पाथ सेलेक्ट करो जो हमने बनाया अभी। वो कौन सा पाथ है? देख, हमारा वाला इसी में है ना, Node.js। Node.js। डेटा में, करेक्ट, हाँ, ये सिलेक्ट, ये हमने बनाया ना, दिस इज आवर डेटाबेस। सेलेक्ट, देखो एक और डेटा वहां पर, ओके ओके, अब देखो वहां एक और बन गया, देखा? Yes, sir. डबल क्लिक ऑन दैट, या डबल क्लिक ऑन टेबल्स, यू कैन सी ना, टेबल इज देयर, इज नॉट कमिंग, No, हाउ sir. पॉसिबल? बट बना तो है तो कैसे आ रहा है फिर? एक काम करो, वेट, गो टू दैट फोल्डर वेयर वी आर डूइंग दिस थिंग्स,
वो लॉक है क्या? बिकॉज ऑफ प्रोसेस इज रनिंग, तो वही लॉक भी हो जाता है। एक काम करो, प्रोसेस स्टॉप करो। अच्छा, 2 बनाया उसने, करेक्ट? Yes. नाम में क्या डिफरेंस है क्या कुछ? टाइप No, sir. नाम सेम है, कुछ तो डिफरेंस है। तो एक फाइल और एक एसक्यूएल राइट फाइल है, ठीक है? Yes, sir. तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना, आई गेस। ओके, डिलीट दैट फाइल, फर्स्ट वन, डिलीट दैट वन, फर्स्ट वन। हाँ, राइट क्लिक एंड डिलीट। फाइल न्यूज Open. बता रहा है क्या? Sir, वो open है file, sir. एक काम करो, विजुअल स्टूडियो में बंद, वो एसक्यूएल राइट स्टूडियो बंद करो। सर, ये फाइल नहीं, हमको ये नहीं, सिलेक्ट करना पड़ेगा एसक्यूएल ना एसक्यूएल राइट स्टूडियो बंद एसक्यूएल करो। लाइट में। उसको बंद करो, इसको बंद करो, फिर से ट्राई करो डिलीट करने का वो फाइल। जाओ वहाँ पर, बिकॉज दैट इज 0 KB ना, 0 KB मतलब उसमें कोई डेटा ही नहीं है। नहीं, 0 KB बोला, ये वाला नहीं। हाँ, नहीं 0 KB, हाँ वो डिलीट करो, इसमें डेटा नहीं है इसमें। हाँ, ये है, इसमें डेटा है, सी ना, 8 KB, करेक्ट? Yes, sir. सो डू वन थिंग, वेट वेट वेट, हाँ, नाउ ओपन दिस फाइल इन एसक्यूएल स्टूडियो, देखते हैं इसमें आता है ऑप्शन एसक्यूएल स्टूडियो, या फिर आई गेस यू टू ओपन फर्स्ट एसक्यूएल स्टूडियो, देन क्लिक ऑन दैट। एरर। आ ही नहीं रहा है क्या? No, वो sir. डिलीट एसक्यूएल डिलीट फाइल किया ही नहीं था ना? हाँ सर, वो डिलीट किया, वही चाहिए था उसको। हाँ, बट वो 0 KB का है ना। अच्छा, मैं समझ गया, मैं समझ गया, कैंसिल करो, कैंसिल, कैंसिल। नाउ गो टू आवर कोड, हमारा कोड है ना, वहां पर जो टॉप पे जाओ, टॉप पे, हाँ, वहां पर .db लिखो, जहां पर डेटा फाइल का नाम है, .db लिखो। हाँ, आई गेस वी हैव नॉट गिवन दैट .db, इट इज गेटिंग कंफ्यूजन। इसको स्टॉप करो, स्टॉप दैट, हाँ, एंड डिलीट दैट फाइल फ्रॉम, डिलीट दैट फाइल। इसको सेव कर दूँ? हाँ, इसको सेव करो, नो इश्यूज, सेव करो, एंड डिलीट दैट फाइल फ्रॉम, where is that data, delete that, yeah, delete karo. Now try to run this program, see what is it is happening or not. Let's see. सेकंड लाइन पे जाओ, देखते क्या होता है। ये रन हो गया, आई गेस। वेट, now go and check whether, I guess, your database file is already created. देखो जाके वहाँ क्रिएट हो गया होगा, है ना? Yes, sir. करेक्ट? हम्म। हाँ, इट्स ऑलरेडी क्रिएटेड। नाउ डू वन थिंग, ओपन दिस इन SQLite स्टूडियो। हाँ, अभी इसको ओपन करो। ऑलरेडी एक काम करो, उसका नाम चेंज करो। इसको डिलीट करना होगा, आई गेस, डेमो 02 वाला। नहीं, यहाँ से डिलीट नहीं, इसको लाइट स्टूडियो में ना, एसको लाइट पे इशू आया था ना। नहीं, यहाँ एसको लाइट स्टूडियो में जाओ, डीबी वाला एरर स्टूडियो, हुआ। वहाँ से डिलीट करो ना, वो राइट क्लिक करके, हाँ, इसको डिलीट करो, या डिलीट दिस थिंग, बिकॉज दिस इज यूजलेस ना। अभी ट्राई करो फिर से, या सिलेक्ट, या क्लिक, बिकॉज यू आर यूजिंग द सेम नेम ना, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अलाउइंग ना। अभी तो आगे टेबल, Yes, sir. एंड राइट क्लिक, एंड उसमें आता है, राइट क्लिक करके गेट द डेटा आता है, व्यू डेटा आता है, व्यू डेटा नहीं तो आता है सारी कमांड, नहीं आता है, गेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन सिलेक्ट एंड रन, इज गिविंग ना डेटा,
काउंटर 0 0 है ना, की वैल्यू फ्रॉम काउंट, ओके काउंटर 0 0 0 जो भी है, काउंटर 0 एंड ऑल दिस 0, ठीक है, की एंड वैल्यू काउंटर 0, ओके। नाउ ट्राई टू अभी इसमें अपडेट करो, मूव डू अ पोस्ट करो, नहीं पोस्टमैन से पोस्ट करो ना, यहाँ से पोस्ट नहीं करना, पोस्टमैन से पोस्ट करो एंड सी काउंट बढ़ता है कि नहीं, चेक इन डीबी आल्सो व्हाट इज हैपनिंग। Start. हो गया ना, हाँ हो गया अब तो गेट में देखो, हाँ गेट में देखो, करेक्ट कर देखो, ठीक है देखो गेट पे यहाँ से देख सकते, यू कैन चेक फ्रॉम हेयर आल्सो देयर आल्सो, चेक करो आया ना 2 2। सो आई गेस वी हैव 2 कॉलम्स, दोनों का नाम काउंटर है क्या, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। की कॉमा वैल्यू फ्रॉम काउंट, टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, टेबल पर डबल क्लिक करें, काउंट सी है ना, काउंट्स नाम का ही एक है ना, कॉलम तो एक ही है ना काउंट्स, नहीं ओपन दैट काउंट, राइट क्लिक ऑन दैट काउंट्स, डबल क्लिक ऑन दैट, नहीं एक्सपेंड दैट ना, या की एंड वैल्यू करेक्ट, की इज टेक्स्ट एंड वैल्यू इज इंटीजर करेक्ट, तो की क्या हो गया काउंटर और वैल्यू क्या हो गया इसका वैल्यू, मींस की इज योर काउंटर एंड वैल्यू इज लेट सपोज 0 1 2 समथिंग लाइक दैट ना, मतलब ऐसा इन्होंने बनाया डेटाबेस टेबल, जस्ट आई एम टेलिंग यू, की इज टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब वी कैन से नेम है ना, वी कैन हैव एनी नेम है ना, एंड वैल्यू वी कैन हैव दिस थिंग। अब देखो वहां पर इंसर्ट क्या हुआ, हमारा कोड में जाकर देखो हमने क्या इंसर्ट किया था, की और वैल्यू में क्या इंसर्ट कर रहे हैं वहां पर होगा ना, हमारे वीएस कोड में, द कोड व्हिच वी आर एग्जीक्यूटिंग ऑन द पोस्ट कमांड, व्हाट वी आर डूइंग दैट, एक देखो वेट, देखो ये लाइन नंबर देखो, लाइन नंबर 6, वो क्या करता है, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, जिसका नाम क्या है काउंट्स, दिया लाइन नंबर 5, क्रिएट टेबल कमांड, दैट इज अ क्रिएट टेबल कमांड, वो क्रिएट करेगा, ठीक है, कॉलम का नाम है ना, टेबल का नाम क्या है काउंट्स, ठीक है, उसमें की का वैल्यू क्या है, एक की बनाया टेक्स्ट, मतलब Text. कॉलम का नाम की है, और एक कॉलम का नाम वैल्यू है, उसका टाइप है इंटीजर, उसमें इंसर्ट किया काउंट की वैल्यू, और काउंटर नाम का एक वेरिएबल इंसर्ट किया, और वैल्यू क्या है उसका 0. 0 0, हाँ तो एक ही है ना, एक ही एक काउंटर है, जिसको अपडेट कर रहा है वो बार बार आई गेस, इज अपडेटिंग मल्टीपल टाइम्स, इफ यू गो डाउन इज डूइंग द सेम थिंग ना, गो डाउन अपडेट कर रहा है, सेट वैल्यू वेयर की इक्वल टू काउंटर करेक्ट, की को क्वेश्चन मार्क लिखा है ना, वो काउंटर ही है एक्चुअली, वो क्वेश्चन मतलब काउंटर हो गया, दैट इज काउंटर, मतलब वो क्वेश्चन मार्क विल बी रिप्लेस बाय काउंटर, ये दैट इज द दिस इज अ सिंटैक्स ऑफ db.run, उसमें वो समझ जाता है कि क्या पैरामीटर्स एंड ऑल दिस, वो बाद में आएगा, तो आई एम नॉट सेइंग यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन, बट आर यू अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट 70% 60% की क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Yes, एपीआई, yes. एपीआई इज टेकिंग व्हाट, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, कुछ भी नहीं है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ही है, ठीक है, यू कैन क्रिएट एनी टेबल, विदाउट टेबल आल्सो यू कैन रिटर्न ना, यू कैन क्रिएट प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स करेक्ट एंड रिटर्न इन द गेट एपीआई, ठीक है, तो अभी मैं क्या असाइनमेंट देता हूँ, फॉर टाइम बीइंग फॉरगेट अबाउट डीबी, डीबी इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, एक और फाइल बनाओ, ठीक है, मैं कल या परसों फिर से बैठूंगा, कल तो शायद पॉसिबल नहीं है, आई गेस ट्यूसडे वेडनेसडे फिर बैठता हूँ, यू मेक वन मोर फाइल ओनली विदाउट डीबी, फॉरगेट डीबी, अभी डीबी भूल जाओ, बट एपीआई नो हाउ टू क्रिएट एपीआई, ये तो समझ में आ गया, हाउ टू क्रिएट एपीआई, rest api dot get, rest api dot post, simple है, then you can give the URL and all those things in function request and response, अब रिक्वेस्ट में कुछ भी लो एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में कुछ भी दो, इसका नेट पे सर्च करो मिल जाएगा, एक्सप्रेस जैसे बहुत सारे जंप मिल जाएगा, आई वांट टू सी सम एंड पॉइंट्स, यू क्रिएट सम एंड पॉइंट्स व्हाटएवर यू कैन क्रिएट, सिंपल, Okay. एंड शो मी बाय ट्यूसडे वेडनेसडे व्हेन वी विल मीट अगेन, सिंपल है ना, जो समझे, रिक्वेस्ट Okay. रिस्पॉन्स मुझे बस चाहिए, डीबी से नहीं मतलब है, डोंट बिकॉज डीबी करोगे आई गेस यू आर गेटिंग, यू विल गेट कंफ्यूज्ड, ओके,
फिलहाल डीबी हम बाद में देखेंगे. Just create one more file and which will also create this web server. Okay, but there will be no DB in that. It will just take request. It will just return the response. That's it. I want that example. So पढ़ो request response में कैसे? How do you extract the request? Suppose you want to post a JSON data. How do you post? How it will take na that value? Correct na? How it will take that JSON value na? Suppose you go to the postman. Go to the postman. अभी postman में are we posting any JSON data? No ना. No, sir. तो बट ऐसा तो पोस्ट एपीआई नहीं होता है ना इन कारण. ठीक है, क्या होता है? ऐसा होता है कि जो हमारा डेटा ले जेसन फॉर्मेट में उसको एक्सेप्ट करे ना. तो यू नो हाउ टू पास द जेसन इन पोस्टमैन, यू नो दैट ना. हाउ डू वी पास द जेसन इन द एज अ बॉडी इन द पोस्टमैन. The body, करेक्ट. yeah. एंड इन टेक्स्ट के बदले वहां जेसन यूज करना पड़ेगा. लेफ्ट राइट Yes, मानो. यू नो दिस थिंग करेक्ट. सो आई वांट यू टू शो मी दिस एग्जांपल कि जेसन दिया, उसने कहीं तो स्टोर किया और वापस से गेट में वापस से तुमको वो मिल गया. ठीक है, सम काइंड ऑफ बेसिक ऑपरेशन, गेट पोस्ट करंट ऑपरेशन यूजिंग. बट अगेन आई एम रीड विदाउट यूजिंग डेटाबेस. नो डेटाबेस, कोई डेटाबेस नहीं, कोई फाइल नहीं. यूजिंग प्लेन ऑब्जेक्ट्स, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, यूजिंग दैट. ठीक है, रिटर्न करो. ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ. गो टू द कोड, वीएस कोड. हाँ जाओ, टॉप पे एक वेरिएबल बनाओ. मैं बताता हूँ वेरिएबल, और उसको एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाओ. वेयर एनीवेयर कंटेंट वेयर, एंड लिखो कि डेटा इक्वल टू एनी कोई इशू नहीं, इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस एंड से एंटर एंड से आईडी एंड कॉलम देके 1, सपोज 1, कॉमा एंटर. यू से ए डबल आर कॉलम and make an array. तो array बनाओ, and array में just put some elements, just 1 2 3 whatever you can put. Now you can put any values. You can put any values, 2 3 values. Okay, now I want that जो हमारा वो request था ना, home request. In home request I want to return this object. How do I do that? Instead of empty object, I want to return that. How do I do that? like response.json और फिर it's a वेरिएबल का नेम, variable का name data आ जाएगा यहाँ पे. करो, try करो. See, let us see what happens. So like here what you'll put, like here it is row dot value. No. I will tell you. Remove all this thing. Remove the curly braces also. And curly braces also remove. Only write data. That's it. Na? Data is itself an object. Na? Data is itself a JavaScript object. Na? JSON क्या होता है? JSON तो JavaScript object ही है ना. What is it? It is nothing but JavaScript object only. Only double quotes का format में आता है ना. You can easily convert any JavaScript object into JSON format. अभी रन करो, it will run. Simple है ना, बहुत easy. और देखो रिस्पॉन्स क्या आ रहा है. इसको रीरन करना पड़ेगा. रीलोड करो पहले. एक्सिट टू रीलोड ना, सेकंड वाला. ठीक है, कोई नहीं, सेकंड से हो जाता है. यू डोंट हैव टू स्टॉप एवरी टाइम, जस्ट रीलोड. सेकंड ऑप्शन है वहां पर, है ना, इट विल रीलोड. डिबग पॉइंट लगाना पड़ेगा. अंदर होम पे ही लगाना है. अंदर लगाना पड़ेगा. होम पे लगाना है. क्या हुआ?
रहने देते ना, होम पे लगाओ, होम पे नहीं लगाओ, लगाओ नहीं लगाओ क्या फर्क पड़ता है, डेटा तो आएगा ना। Is giving any error or what? Go to the postman. postman. क्या आया? स्लैश होम पे ना, स्लैश होम ना, सेंड, तो वो क्या आ रहा? फिर वो डिबग पॉइंट आया ना, Yes, कमिंग, sir. इतना सिंपल है। कुछ भी नहीं, वी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट नवनीत। अल्टीमेटली जेसन कुछ नहीं है, जेसन इज द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओनली। जेसन का फुल फॉर्म क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, वो बना ही जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से। इज वेरी मच compatible with any JavaScript object. You give anything. मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जाओ वापस जाओ, जहाँ डेटा लिखा था ना, वो डेटा हटा दो, है ना, वहाँ लिखो जस्ट रिमूव डेटा, टाइप इन सिंगल कोट्स हाई, सिंगल कोट्स हाई, बस अभी करो, देखो क्या आता है। रिलोड करो, सेकंड लास्ट से, सेकंड लास्ट बटन से रिलोड करो, डिबगर, हाँ सेकंड लास्ट, हाँ रिलोड करो, फिर से रिलोड नहीं हुआ, रन नहीं हुआ, डिबगर हटा दो, नो नीड ऑफ दैट डिबगर पॉइंट फर्स्ट नंबर, क्यों लगाना है बार बार डिबगर, वो तो प्रैक्टिस करेगा ना डिबगर, रिमूव दैट डिबगर ना, फर्स्ट लाइन से ब्रेक पॉइंट, वो उसको ब्रेक पॉइंट बोलते हैं, रेड में दिख रहा है ना ब्रेक पॉइंट फर्स्ट लाइन पे, Yes, sir. उसको हटाओ ना, उस पर क्लिक करो, हट जाए, हाँ अभी करो, यस ठीक है, करो, उस पर भी ब्रेक पॉइंट नहीं चाहिए, ठीक है कोई इशू नहीं, इट इज नो यूज। अभी करो, सेंड करो, क्या आता है, आ गया, Yes, sir. बहुत इजी है। ये रिएक्ट से ज्यादा इजी है, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, नोड जेएस में रेस्ट एपीआई में, डेटाबेस में क्या डेटा लिया, इधर डाला उधर से निकाला, यही करना है, कुछ नहीं करना है। रिएक्ट तो फिर भी कॉम्प्लेक्स, उसमें बहुत चीज है, इधर से फॉर्म लो, वैलिडेशन करो, वो करो, बैकएंड में कुछ नहीं है, बैकएंड बहुत ईजी है, ठीक है, उसमें भी बहुत एडवांस चीज होता है बैकएंड में, बट बेसिक सीखने में कोई उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, डेटा लेना है जेसन में, जेसन से दिखाना है, भेजना है, और नोड जेस के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, हाउ डू यूज असिंक अवेट एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सब इंपॉर्टेंट है। कॉल बैक क्या होता है, कॉल बैक तो, बट I guess half of the thing you already study in the half क्या more than half you already study in the React, correct? वहाँ भी call back है, वहाँ पर भी async await होता है, correct? वहाँ भी promises है। So when you go for an interview, your half of 70% work is already done ना? They will ask you what is promise. Promise का concept React में और वो तो same ही है ना? Okay, what is multiple? How do you handle multiple API request call? तो ये सब easy है, that is वो बताऊंगा, examples भी दूंगा। So I guess you're getting ना? You're getting the basic thing or Okay. still you want to ask something? Yeah. करण नो सर। आ रहा है ना, तो हाँ, तो व्हाट वी विल डू, ठीक है, अभी 2 दिन बाद मिलते हैं, तो 2 दिन में डेटाबेस के साथ प्रैक्टिस करो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट फर्स्ट डू विदाउट डेटाबेस, एंड आई वांट टू सी सम एग्जांपल्स कि तुमने गेट किया, पोस्ट किया, ठीक है, अभी गेट किया, हाई आया, हाई से मेरे को कोई फायदा नहीं है, बट सपोज वो ऑब्जेक्ट आया था, उस ऑब्जेक्ट में मुझे कुछ, आई वांट टू इंक्रीज द काउंट, आई वांट टू ऐड मोर एरे, एक एरे है जिसमें एक स्टूडेंट का नाम है, पोस्ट किया, दूसरा नाम भेज दिया, I want to add more objects in that. How I can do using JavaScript? We can do it. तो पढ़ो, कैसे we can do, थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ो, एंड बेसिक है, बहुत इजी है, एक्सप्रेस के बारे में पढ़ो, हाउ डू एक्सप्रेस वर्क, हाउ डू नोड.js वर्क, बेसिक्स, ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग कि अभी यू डोंट फोकस ऑन रिएक्ट, यू फोकस ऑन रिएक्ट, है ना। तो अभी रिएक्ट में कहाँ तक, क्या प्रोजेक्ट में कहाँ तक पहुंचा अभी हम लोग का, व्हाट वेयर इज द प्रोजेक्ट, ऑलमोस्ट हो गया है Sir, प्रोजेक्ट। almost हो गया, complete हो गया था। हाँ, sir. ठीक है, we'll see, I will check that also, and that also I will tell you how to improve, or that also will check, but at least I guess this week we will focus on this thing, है ना, at least we will have, because the momentum is very important, है ना, momentum is very important, every day will, if you practice 1 hour 2 hour तो समझ में आने लगेगा, अच्छा ये ऐसे हो रहा है, क्या वैसा हो रहा है, तो आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो कोई नहीं, यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग, आई गेस रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो ठीक है, नो इशू, एंड विल सी नेक्स्ट टाइम, ओके, तो
तो कैसा लग रहा है Node.js? लग रहा है कि हो पाएगा, लेकिन लग रहा है कि यहाँ बहुत हार्ड है। थोड़ा हार्ड है। So तो you मुझे can इजी लग रहा है, तुम लोग try. को बोल रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है। आ जाएगा, कोई नहीं है ऐसा। कोई भी चीज को थोड़ा समय लगता है ना। फ्रंट एंड बैक एंड कैसे करते हैं ये, इसका एडवांटेज क्या होता है कि सपोज यू आर गोइंग एज अ डेवलपर, यू कैन इजीली चेक द डेटाबेस, डेटा कहाँ से आ रहा है, यू कैन चेक एंड टू एंड प्रोसेस। ठीक है, बहुत बार में क्या होता है, मैंने टीम में देखा है, जैसे फ्रंट एंड डेवलपर कोई काम कर रहा है, तो फ्रंट एंड में काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर डेटा गड़बड़ आ रहा है तो वो बोलता है बैक एंड का इशू है, बैक एंड का डीबी का इशू है, वो डीबी बोलेगा नहीं हमारा इशू नहीं है, रिएक्ट का इशू है। तो समझ में नहीं आता बहुत बार कि इशू कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अगर आपको एंड टू एंड पता है कि डिबग इट ना, अच्छा मैंने ये रिक्वेस्ट भेजा, डिबग करके देखो बैकएंड का एपीआई में क्या इशू आया, डीबी कहां से आया, डीबी विल हैव द एक्सेस टू डीबी आल्सो, डीबी में जाकर चेक करो डेटा आया कि नहीं आया। तो इजी। एसक्यूएल लाइट मैंने क्यों लिया, बिकॉज़ इजी है ना कराने के लिए, बहुत इजी है, वी डोंट हैव टू इंस्टॉल एनीथिंग, बहुत इजी है, पाइथन इंस्टॉल करो एंड दैट्स इट। ठीक है, बट पोस्ट एसक्यूएल लाइट मार्केट मतलब इंडस्ट्री में कम यूज होता है, इट इज मोर फॉर मतलब लेस होता है यूज। मोस्टली वी पीपल यूज माई एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर, और नाउअडेज पोस्टग्रेस भी बहुत, अभी पोस्टग्रेस करके भी डेटाबेस है, वो बहुत मार्केट में चला हुआ है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल। तो वो सब ठीक है, वो डेटाबेस एंड ऑल दोस थिंग्स, वो कोई बड़ा चीज नहीं है, हो जाता है। एंड हाउ टू डिजाइन रेस्ट एपीआईज एंड हाउ टू, मैं कोई बताऊंगा और थोड़ा अच्छे से एडवांस में बताऊंगा धीरे धीरे, इट विल टेक सम टाइम। ऐसा नहीं होगा कि तुम यू लर्न इन 1 वीक एवरीथिंग, बढ़िया, लेट इट टेक थोड़ा टाइम, आई विल टेक वट एवर पॉसिबल क्लासेस, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जितना भी पॉसिबल हो मैं लूंगा, एंड बेसिक करा दूं, तो यू फोकस ऑन द रिएक्ट ओनली। एंड बढ़िया, एट द सेम टाइम इफ समबडी आस्क यू कि हाँ डू यू नो Node.js, you know Express, yes, I know we have done basic practice, ऐसा कुछ नहीं है, आई नो, फिर आंसर बताओ, अगर उनको अच्छा लगा तो इट इज प्लस पॉइंट फॉर यू ना, कि बेसिक्स भी आता है, प्लस भी आता है। और वो मैं डेटाबेस भी बताऊंगा, हाउ टू डिजाइन डेटाबेस, एग्जांपल से कुछ असाइनमेंट भी दूंगा कि हाउ टू डिजाइन डेटाबेस एंड हाउ टू डिजाइन प्रॉपर रेस्ट एपीआईज। तो हाउ टू, मतलब बहुत उसमें मतलब कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएगा, बट या ऑब्वियसली इंडस्ट्री लेवल पे जाना है, तो हमारा फंडा मेरा वही रहता है कि इंडस्ट्री लेवल पे जो चाहिए एटलीस्ट वहां तक पहुंचो, तो दे विल सी वैल्यू कि हाँ भाई इसको आता है ये सब, तो आता है। ठीक है, कोई इशू नहीं, विल सी दैट। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर, हाँ? ठीक है, जी सर। Okay, sir. ठीक है, ओके, स्टॉप द रिकॉर्डिंग, ओके।